Android पे there is an app in which the lectures have been launched. इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का फिर से टेक्निक. इंडियन मैप का एक्चुअली टेक्निक नहीं है. इंडियन मैप यू कैन स्टार्ट, जनरली इंडियन मैप इस मैप की जरूरत पड़ती है. यू डोंट हैव टू शो दैट एंटायर मैप. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर this way, and then this is the most commonly used map of India. This is more than enough. इसमें सब कुछ दिखा सकते हो except अगर हिमालयन स्टेट्स सब पूछे है तो you can show most of the agriculture pattern, population distribution, cities, everything can be shown on this map. So this is, and it will take hardly 10 seconds to draw this map. But if you want to draw that map of India, उसको मैं बाद में बताऊंगा. फिर first मतलब पहले आज ही बताऊंगा. But first let us complete the volcanism. That is the next topic of geography, volcanism. No, sorry, we were doing the rifts, faults. Normal कितना degrees? 45 degrees. Reverse, which force? Compressive force. What is the key word in normal fault? Crustal lengthening, extension. What is the key word in the reverse fault? Crustal shortening. Crustal fault में degrees, no, reverse fault में degrees. So you can take down in the reverse fault just one. Generally in the reverse fault, the angle is around 22 degrees. 22 degrees. Angle is around 22 degrees. मतलब देखो, एक में ज्यादा एंगल है, एक में कम एंगल है. किस में ज्यादा एंगल है? In the normal fault. The angle is less in the reverse fault. No need of remembering. We have done the reverse fault in the Himalayas. What are the 4 faults in the Himalayas? बहुत आसान है याद रखना. Again, I'll take the help of the same map of India. This is river Indus, Kailash Mansarovar range. Fine. This is river Brahmaputra, again Kailash Mansarovar range. So इस fault में से, इस rift में से which rivers flow? Indus, and then Brahmaputra is Sangpo. उसके बाद it is fault, so Suchar and Zone, ITSZ. This one fault. उसके बाद the next fault is main central thrust. सिर्फ ना याद रखना है कि C central thrust is before main boundary fault. And lastly, between the Shivaliks, where are the Shivaliks? Shivaliks, agar this is the Great Himalayas, uske baad there is a Middle Himalayas, uske baad there is Shivaliks. So where are Shivaliks? On the outside. So therefore it is known as Himalayan frontal fault. Getting it? Himalayan frontal fault. So these are the 4 kind of the faulting mechanisms. Next point is, in this is, where are the rest of the faults in India? एक GS के लिए याद रखना, again the simple topic part, Vindhyas and Satpuras are rift valley, while Narmada, Tapi, sorry, Vindhyas and Satpuras are block mountains, while Narmada, Tapi, etc. are the rift valleys. So, one point for GS is
ये की पॉइंट होना चाहिए. Vindhyas and Satpuras are the block mountains. Narmada, Tapi, Son and Damodar are the 4 rivers in India that flow through the Rift Valley. But ऑप्शनल में थोड़ी लैंग्वेज देखो कैसे चेंज हो जाती है. कैन आई कंटिन्यू? सिमिलरली during the formation of the Himalayas, during the formation of the Himalayas, extreme compressive forces caused formation of the reverse faults, even in the peninsular plateau, in the form of upthrusted means कुछ पार्ट ऊपर आ गया. upthrusted block mountains of Vindhyas, and their extension in the form of Kaimur, ranges. Extension in the form of Kaimur ranges, full stop. As well as similarly Satpuras are also an example of block mountains. Everyone carrying atlas? Open the map of India. Fine. First map of India, that is the physical map. Can you see Vindhyas? Can you see Satpuras? Can you see in the Vindhyas end में near Bihar, Jharkhand, Kaimur? Can you see Kaimur? So Kaimur, फिर नीचे आना सतपुराज में. Can you see Amarkantak plateau, Amarkantak region? कौन सा माउंटेन है नियर द अमरकंटक? Which is this? Mount Everest. It is Maikal. मिला? Maikal. कैमूर रेंज, उसके नीचे रामगढ़ हिल्स, उसके बाद मैकाल हिल्स के आसपास जो रीजन है, ये जो ब्राउन कलर का रीजन है, दैट इज अमरकंटक प्लाटू. फाइन. बागेलखंड के जस्ट नीचे दिस इज एन अमरकंटक प्लाटू. उसके बाद वी हैव गवालीगढ़ हिल्स, वी हैव महादेव हिल्स में यू विल फाइंड अ पीक known as Dhupgarh. Is it present in the atlas? Even in Orient Longman है properly? है? महादेव हिल्स. अब आपको एक छोटा होमवर्क है.
We will not wait till Indian geography. You just take out 30 words. 30 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए ऑफ द मेजर माउंटेन्स, जो जो फिजिकल फीचर्स जियोमॉर्फोलॉजी में आते हैं, दे शुड बी डन प्रॉपरली फॉर द मैप पॉइंटिंग. वी हैव सीन द मैप पॉइंटिंग क्वेश्चन. कल मैं आपको ब्लैंक मैप भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट यू शुड हैव अ लिस्ट. देखो, देयर इज अ माजिद हुसैन का बुक ऑन द मैप एंट्रीज. देयर इज वन मोर बुक इन द मैप एंट्रीज. उसमें 300-400 मैप एंट्रीज है. खुद ही को पूछो, पॉसिबल है इतना याद रखना? नहीं. So, कैसे याद रखोगे? What is the best way to remember? The best way to remember is just having a separate page of yours, having a separate booklet of yours, जिसमें main mountains, what you do, you note it down. You take all the past year map entries, note it down, and उसमें से 6 या 7 map entries हर साल आती है. The main इसमें से 2 और 3 के लिए don't fight too much, because वो 2-3 map entries are not present in any of the books. They come from Hindu. Fine, or they come from the current affairs. So just go home, Google, don't use the entry ka books, Google, put Kaimur Hills, लिख के आएगा which state. Fine, so that is one point. Second point, you already know it is a part of Vindhyan. ठीक है, विंध्याज. अब विंध्याज, you being a geography optional person, you know अगर Google पे लिखा है it is a part of Vindhyan scrapland, उस पे लिख के आएगा इट इज मेड अप ऑफ मार्बल्स. अब व्हेन यू सर्च फॉर एनी ऑफ दिस मैप पॉइंटिंग, हाउ टू यूज गूगल, गूगल करो, उसमें विकिपीडिया, विकिपीडिया में डायरेक्टली द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली इंट्रोडक्शन. फाइन. और अगर उसमें पॉइंट्स कम है तो उसमें एक टैब होता है रिगार्डिंग ज्योग्राफी ऑफ द रीजन. जस्ट पुट ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, एंड ज्योग्राफी में रिवर्स व्यूअर्स सब आ जाएगा. दैट इज इनफ ऑफ एनी प्लेस. So if we do it properly for the physical map, हमारा सिर्फ बचेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल जमशेदपुर बच जाएगा, या कोई बैलाडीला हिल्स बच जाएंगे. दे आर एग्जांपल फॉर द मिनरल डिपॉजिट्स. इससे 2 फायदे होंगे. यू विल बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली इवन फॉर जीएस मैप पॉइंटिंग. जीएस मैप पॉइंटिंग जो प्रीलिम्स में आता है. गुड, गेटिंग इट. यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ पे कौन सा प्लाटू है, कौन सी नदी है, एंड दिस थिंग्स विल कीप ऑन रिपीटिंग. Have a separate page, means I will be giving you homework, discussing next day in the class. अगर मुझे लगा कि कुछ अच्छा important topic हम कर रहे हैं, because Davis Bank शुरू हो जाएगा तो फिर से इतने important नहीं आएंगे. So today your important points are getting the location, कहाँ पे है, and फिर मैं कल आपको blank map में बताऊंगा how to mark them. Fine, getting the location. So your homework is Kaimur Hills. 30 वर्ड्स क्या है? स्टेट, विच पार्ट ऑफ इंडिया, वेदर ऑफ अ रीजन, एंड इफ एनी रिवर इज ओरिजिनेटिंग और नॉट. हो गए 30 वर्ड्स. यू डोंट हैव टू कैमूर हिल्स. सेकेंड होमवर्क इज धूपगढ़, धूप, DHUP, धूप, GARH, गढ़. Third homework is, I'll give you 5 map pointing पे questions. Third homework is Mahadev Hills. इसके लिए तो इतना मिलेगा तुम्हें, part of Satpuras. Fine, Mahadev Hills. It has the highest peak of the Satpuras, Dhupgarh. The famous hill station of Pachmadi is located near it. This is a part of Pachmadi Biosphere Reserve. Has tiger population and teakwood population. Fine. River Narmada flows through the region. Endless information is there in this. Dhupgarh, Mahadev Hills, Maikal Hills, and fifth, Amarkantak Plateau region. Amarkantak Plateau region. फास्ट रीडिंग टू विकिपीडिया. ठीक है, जिस अगर टाइम है आपके पास, इफ यू हैव इनफ टाइम, यू कैन गो इवन टू डेमोग्राफी. क्या फायदा होगा? ट्राइब्स भी कवर हो जाएंगे,
ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं, बट जीएस में ट्राइब्स कवर हो जाएंगे कि कौन सी ट्राइब्स आर लिविंग इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री. फाइन. You have to look at any geography, any important points. See, what does the UPSC ka language says regarding the map pointing? UPSC ka language says regarding the map pointing, an outline on the outline of India, a map of India provided to you, mark the location of all of the following. Write in your question booklet the significance of the locations, and what are the significance? Physical, geographical, or if commercial. Commercial abhi nahi milega that much in this, except that it is a hill station or something. Economic, economic and commercial is same. Ecological, tropical deciduous forest. Fine, teak wood. Environmental, cultural, इस साल के पेपर में ये है. और स्ट्रेटेजिक और एनीथिंग, मीन्स यू कैन राइट एनी ऑफ दिस. अगर एक भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लिखा तो 30 वर्ड्स, in not more than 30 words for each. Fine, so you have to write any. But if a place is there, for example, if a place is there that is the Nathula Pass, kahan pe located hai? Physical, in the Great Himalayas. State, Sikkim. Environment or climate, it is mostly covered by the ice. Strategic importance or economic importance, that it is a connecting link between India and China. Fine. So this is how we will have to answer any of the points. So isme you will not find much in Kaimur range, but you will find enough information in the Amarkantak plateau, in the Dhupgarh region, and in the Maikal ranges. Fine. See, even if we do 10 map entries in a week, fine, it will be more than 100 map entries. More than 100 map entries, पता भी नहीं चलेगा कब शुरू की और कब खत्म की. But if you try to do the 100 map entries exam के लिए after your prelims, तो फिर you will get frustrated, फिर छोड़ दोगे. Small things, fine. Or example of a block mountain. Full stop. Through the rift valleys, rivers Narmada, Tapi, Son and Damodar flows. Rivers Narmada, Tapi, Son and Damodar flows. Fine. And draw this map. देखो इंफॉर्मेशन सभी है, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट. अगर जरूरत नहीं है तो नो नीड ऑफ यूजिंग. सी अब देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग अपर पार्ट, सो आई एम कटिंग इंडिया. Vindhyas. Ideal map है, not needed कि you should be drawing only like this, but 7 different mountains of Satpuras.
ये यहाँ पे अमरकंटक प्लाटू का एक पॉइंट मिल गया. अमरकंटक प्लाटू इज अ रीजन वेयर river Narmada and Son originates. Hmm? Hmm. No, no. मुल्ताई महादेव से थोड़ा नीचे. There is a separate tank near पचमढ़ी के पास ही. एक जनरल आप बोल सकते हो फ्रॉम द महादेव हिल्स. Fine. तीसरा kind of a fault. The next kind of an fault here. दामोदर गंगा. गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज. इस डिस्ट्रीब्यूटरी को हम जो इंडिया में आती है जिसके ऊपर कोलकाता इज लोकेटेड वी कॉल इट एज हुगली. जो बांग्लादेश में जाती है वी कॉल इट एज पद्मा. पद्मा विल देन गो एंड मीट ब्रह्मपुत्र and Brahmaputra is known as Jamuna. All will form Padma and Jamuna will form Meghna. Meghna. So Padma and Hooghly are the two main distributaries of river Ganga. Tributaries नहीं. Yamuna is the tributary, Padma is a distributary. मतलब जिससे river बनती है that is tributary. The river जिससे खत्म होती है by making a delta that is distributary. अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं. The next kind of a fault, very easy, कुछ लिखने की, again there is nothing to understand in it. It is known as strike slip fault. What is a strike slip fault? These two are divergent plate boundaries. For example, these two are the divergent plate boundaries. Fine. So if these two are the divergent plate boundary and if this is one plate here, now consider ये plate भूल जाओ. This is a divergent plate boundary with the table and there is one more plate here. So because this is a divergent plate boundary and it is moving away from the table, क्या हो रहा है with the duster? Imagine if this is another plate. What kind of fault it is then? Transform fault. So in the transform fault, the plates move parallel to each other. And this kind of a fault is what is known as a strike slip fault. जब the plates are moving parallel to each other. In the strike slip fault, you do not have block mountains. You will just have crack, and that crack is Rift Valley. Getting it? That is, if this is the mid-oceanic ridge. In this mid-oceanic ridge, the two plates are moving in opposite directions. As the two plates are moving in opposite directions, numerous cracks are formed in the big plate. And because of ये बन जाता है one part, ये बन जाता है दूसरा part, ये बन जाता है तीसरा part. Now, because they are moving at different speed, what happens? It looks as if these two plates are moving parallel to each other. So such kind of a fault is what is known as a strike slip fault, when the two plates move parallel to each other, or in other words, strike slip fault matlab transform plate boundary. Remembering transform plate boundary, remember our diagram of a transform plate boundary. दो plates थी, एक plate पीछे की तरफ से it was
moving parallel to each other. So this is what is the transform plate boundary. In the transform plate boundary, can I say because they move parallel to each other, either the movement will be to the right or the movement will be to the left. मतलब if this is one plate boundary and if this is the plate boundary, either the movement, if this plate is moving, the plate is moving to my right, fine, or if this plate is not moving, this plate is moving, that means it is moving to the left. So that is what is the strike slip fault. बिल्कुल काम का नहीं है एग्जाम के लिए, सिर्फ मेंशन करना है either rightward or leftward movement of a plate is what is known as strike slip fault. Where is the strike slip fault? Open again your atlas, the page number I guess 119, plate tectonics जिसपे whatever your atlas is, what that area where there is plate tectonics. Can you see railway line? पेज नंबर 119, इसमें तुम्हारा पुराना एडिशन है 114, देखो 114. So in this railway line क्या है ये? This line is divergent plate boundary, but in this divergent plate boundary due to continuous volcanic eruptions, plates के टुकड़े हो रहे हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद that is when the plate is breaking at the point of origin, you can see how the lines are shown. These are strike slip fault or transform plate boundaries. This is what is the transform plate boundary. See what is happening in the divergent plate boundary? Volcano, right? Due to volcanic eruptions, will a big plate break into smaller pieces at the point of volcanic eruption? पूरा plate नहीं break हो रहा है, only the margins are getting broken, and because the margins are getting broken, what is happening here is छोटे छोटे transform faults are being created. And then though the entire North and South American plates are moving in opposite directions to the Eurasian and African plate, we call this entire boundary as a divergent plate boundary. But in the divergent plate boundary, perpendicular to the divergent plate boundary, छोटे छोटे transform faults are being developed. One example. So depending on right or left. Second example, San Andreas. So you already know where is San Andreas. San Andreas is moving, Pacific plate is moving to the northeast. Means अगर कोई USA से देख रहा है तो उसको लगेगा राइट साइड में मूव कर रहा है, कोई पैसिफिक प्लेट के ऊपर खड़ा रह के देख रहा है तो उसको लगेगा लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है. दिस इज व्हाट इज द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. नथिंग बट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. आउटकम कुछ खास नहीं. सो the strike slip fault originates due to the horizontal movement or transform plate boundary or the transform plate boundary. क्यों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही हम बात कर रहे हैं? बिकॉज इवन इन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देयर इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्लस देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम बिलो, वर्टिकल प्लेट मूवमेंट. इन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आल्सो देयर इज अ वर्टिकल मूवमेंट, सबडक्शन जोन. यहां पे कैसा है मूवमेंट? सिर्फ हॉरिजॉन्टल. फाइन. सो देखो, खुद सोचो, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में एज द प्लेट्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कुछ खिंचाव नहीं. सो इसलिए कुछ पार्ट नीचे से नहीं चला जाएगा, नथिंग इज बीइंग कंप्रेस्ड, सो कोई पार्ट ऊपर नहीं आएगा. सो व्हाट विल बी एब्सेंट इन द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट? वोल्केनोज विल बी एब्सेंट, और दूसरा वन थिंग विच इज, व्हाट इज दिस?
block mountains will be absent. For block mountains to be present, something has to rise up. कब आएगा? If I compress it, then कुछ part ऊपर आएगा. If I pull it, then some part नीचे चला जाएगा, तो बचा हुआ part will be block mountains. But यहाँ पे block mountains will be totally absent. Getting it? So next point. The strike slip faults were identified by were identified by Tuzo Wilson. Tuzo Wilson. कौन है Tuzo Wilson? Plate tectonics. Were identified by Tuzo Wilson. When he saw that certain portions of mid-oceanic ridge are broken due to volcanic eruptions. Understanding the railway line wala symbol, certain portions of mid-oceanic ridge. अगर had it been only divergent plate boundary तो सीधा line होती, there would not have been a railway track. ये perpendicular lines to the divergent plate boundary is what? Certain portions of the mid-oceanic ridge which has been broken due to volcanoes, and then वो plate move करेगी, वो plate एक ही direction में move करेगी, but जो crack बड़ा है वो शायद धीरे move करेगा, the crack which is smaller it will move faster, depending करेगा, और you cannot know about which part is going to move faster or smaller, but ये plate break हो गई, and then they start moving parallel to each other, either in the same direction or either in the opposite direction, but बन गया transform fault. Fine, any crack is a fault. Second, this kind of the transform fault, are generally perpendicular to the mid-oceanic ridges. Getting it? Next point. Another example of strike slip fault is the Great San Andreas fault system. The Great San Andreas, SANADREAS, San Andreas fault system, which runs for 1200 kilometers. Next point. The strike slip fault do not have block mountains or scraps. Do not have block mountains or scraps. Do not have block mountains or scrap. Understanding scrap मतलब क्या है? इस block mountain only जो side है, that is a escarpment or a scrap. GS के लिए 2 points. Strike slip fault में there can be right side का movement or there can be left side का movement. Understanding means the plate will either move to the right or left. If it moves to the right versus it moves to the left, GS में इतना याद रखना, this is known as sinistral fault or the distral fault.
Left is sinistral. Yes. Right. Sorry. Left side and right side. मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया हूँ. You also check left hand को क्या कहते हैं? I guess it is sinistral only. Right hand is dextral. इसका मेंशन नहीं करना है. इन ऑप्शनल में इसकी सबकी जरूरत नहीं है. And the last kind of fault is step fault. See, when you read any book क्या कहता है? कोई भी अच्छा बुक कैसे करता है? ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, वो कंसेप्ट समझाएगा, एक एग्जांपल देगा. योर आंसर शुड आल्सो बी द सेम. दैट्स व्हाई योर नोट्स आर आल्सो द सेम. एक कंसेप्ट, एग्जांपल. फाइन. इसका एग्जांपल स्टेप फॉल्ट, वेस्टर्न घाट्स या डेक्कन प्लेटू, डेक्कन ट्रैप्स. इसका एग्जांपल इज डेक्कन ट्रैप्स. That is, if due to some reason, see, this is how our original landmass was, Indian plate. Due to some reasons, I will not explain you now the reasons. There was a cracking in the Indian landmass. फिर there was a movement. I will explain you later on why is the movement. Then later on there was the movement in which जैसे जैसे क्रैक हुआ, the side went below. So as a result of this, इसको हम कहेंगे the fault which looks like steps. Reality में अब India is this: Arabian Sea, मुंबई, खंडाला, लोनावाला जो हिल स्टेशंस है, पुणे, उसके बाद नेक्स्ट सिटी, थोड़ा आगे जाओगे तो जलगांव, औरंगाबाद, थोड़ा और आगे जाओगे तो अमरावती, नागपुर, थोड़ा और आगे जाओगे तो तेलंगाना. This is how the step fault is, and hence this is also known as Deccan traps. अब क्या होता है? Generally we don't study these things in detail. Question पूछता है यूपीएससी regarding the formation of Deccan traps. You write an answer regarding the formation of Deccan lava plateau. पूछा ही नहीं है. Deccan lava plateau is volcanic. Deccan traps is fault. Write a short note on the Deccan traps. Why the word traps? Because traps मतलब staircase in Swedish language. इसीलिए उसका नाम है Deccan traps. This is a staircase because it has a staircase-like aspect. So for a person who comes from the Arabian Sea and lands in Mumbai or lands in Bangalore or lands in Karnataka, anywhere in Canara coast or lands in Kerala, उसको लगता है this is a continuous mountain, but this is nothing. This is a plateau. When he climbs this, फिर नीचे उतरते उतरते ऐसे उतरता है. So from the eastern side, this is the Deccan traps. From the western side, it is the Western Ghats. Not so. लिखते समय आंसर में दोनों की चीज दोनों एक ही है, but this side is Western Ghats. Understanding किसी माउंटेन का नाम घाट क्यों है? घाट मीन्स वन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, बेदिंग घाट, वाराणसी के घाट, स्टेप्स है वहां पे वाराणसी. तो यहाँ पे डेक्कन प्लाटू में देयर आर स्टेप्स एंड देयरफॉर वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन ट्रैप्स. कौन सा साइड? ईस्टर्न साइड. गेटिंग इट? वाई? थोड़ा दिमाग लगाओ. वाई? बुक्स में नहीं दिया है वाई, बिकॉज उनको लगा कि ये लॉजिकली सबको पता होगा. देयर वाज सो मच लावा फ्लो कि प्रेशर बढ़ा ऊपर से, एंड बिकॉज प्रेशर वाज देयर, पार्ट नीचे चला गया. जितना ज्यादा लावा फ्लो हुआ
जहाँ पे लावा गॉट accumulated, that part ऊपर से प्रेशर ज्यादा बढ़ा and that part went down. So during the Cretaceous period, Reunion Highlands से there was a hot spot. So during the formation, वो volcanic eruption started, cracking of the plate was occurring, lava started flowing. Indian plate was somewhat like this, that is the eastern part was slightly sliding towards the east, the Deccan Plateau slides towards the east. Getting it? Godavari वो सब का हमने देखा है. So the lava started flowing towards the east. As the lava got accumulated, maximum towards the eastern margin, pressure बढ़ गया, ये सबसे नीचे चला गया. Then ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया. ये नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि लावा का प्रेशर कम था. क्यों कम था? क्योंकि जहां से लावा फ्लो हो रहा था उसके बाद लावा यूज्ड टू फ्लो because the slope was to the east. This is how the Deccan traps formed. What? West to east. West to east. Lava nikla from the Western Ghats, but because the Indian plate was slightly sloping towards the east, so due to gravity, magma started flowing towards the east. कौन सा magma था? क्यों flow हुआ? Basaltic magma. Therefore, it flows for a larger distance. And this is what is the Deccan lava plateau. सिलिका कम. सिलिका अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेनाइट, and it cannot flow. Silica will become very viscous. Example, plaster of Paris. क्यों हम ये plaster of Paris क्यों है? जल्दी सूख जाता है सिलिका. चूना जल्दी सूख जाता है सिलिका. व्हाइट कलर क्यों है? सिलिका. ग्रेनाइट का व्हाइट कलर क्यों है? सिलिका. बसाल्ट का ब्लैक कलर क्यों है? आयरन. आयरन जल्दी सूखता नहीं. क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि it is metal which has melted and it will take time to get cooled. Physics. Understanding? Step fault. इसीलिए तो महाराष्ट्र में इतने ज्यादा waterfalls. In this region there are so many waterfalls, there are so many hill stations. Therefore, not just Maharashtra, go to Karnataka, ये भी same है. This is Bangalore, this is Bangalore. Pune and Bangalore are at a greater height. And इसलिए यहाँ का climate is very good. Summers it is not that hot. थोड़ा ठंडी रहती है. हमेशा बारिश भी कभी भी हो सकती है. Why? Because they are located at a height. And climate का याद रखना, GS का portion, temperature decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer. Lapse rate. You go to the next part, औरंगाबाद और मराठवाड़ा region, temperature भी बढ़ेगा, सूखा भी रहेगा. Why? Rainfall is always on the windward side. As it crosses the southwest monsoon, it is forced to come down. As it is forced to come down, it will, जब भी air is forced to come down, it will not give rainfall. When the air is forced to rise up, it will give the rainfall. शाम को बारिश होगी आज, हो सकती है. क्यों? दोपहर में धरती गर्म हो जाएगी. लो प्रेशर के कारण जो भी बादल है, they will be forced to rise up and they will give the rainfall. We'll do this in climate, relative humidity वाला concept. Fine? केरला में एग्जैक्टली ऐसा नहीं, बिकॉज इतना टेपर हो जाता है. बट इसका बेस्ट एग्जांपल इज महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा. दिस आर द थ्री थिंग्स. इसीलिए दिस रीजन इज ड्रॉट प्रोन. दिस एंटायर बेल्ट इज ड्रॉट प्रोन बेल्ट. तेलंगाना यहाँ पे सबसे नीचे है, बारिश और कम, गर्मी और ज्यादा. विदर्भ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. यस, हाइट मीन सी लेवल. जब भी हम हाइट की बात करेंगे, बेस लेवल इज मीन सी लेवल. सो दिस इज डेक्कन ट्रैप्स. बहुत सुना होगा डेक्कन ट्रैप्स. याद रखना, ट्रैप्स मतलब स्टेयरकेस, स्टेप्स. and therefore Deccan lava plateau is different. Deccan lava plateau का aspect कैसा है, shape कैसा है? like traps, like staircase. Getting it? So this is how on the eastern side. फिर गोदावरी नीचे आएगी, waterfall बनाएगी. You have one of the hydroelectric power project. फिर से waterfall बनाएगी, hydroelectric power project. फिर से waterfall बनाएगी, hydroelectric power project. जिसमें से एक
परसों के न्यूज में था, जिसमें से वाटर हैज बीन सप्लाइड टू चेन्नई. व्हाट इज द नेम? वाटर सप्लाई हुआ है चेन्नई से. कैसे सप्लाई हुआ है? ट्रेन से. ट्रेन में कैसा डाला गया? लिफ्ट करके. सब कुछ था न्यूज में. लिफ्ट इरिगेशन से लिफ्ट करके ट्रेन में डाला गया. लिफ्ट क्यों करना पड़ा? वाटरफॉल से, लोअर हाइट पे है. एंड उसके बाद नीचे जाओगे तो चेन्नई, तमिलनाडु. सो इसलिए तमिलनाडु प्लेन्स, केरला प्लेन्स, कर्नाटका प्लाटू, महाराष्ट्र प्लाटू, ये ऐसे नाम क्यों है? कल्चर क्यों अलग है? तमिलनाडु का कल्चर पूरे डेक्कन से अलग क्यों है? डेक्कन का कल्चर पूरा सेम है. Means for example, a person may be Maharashtrian, the person may be Karnataki, from Karnataka or maybe from Andhra. तीनों का कल्चर एक होगा, लैंग्वेज डिफरेंट होगी if he is from Deccan. So person from Maharashtra who is from Deccan will be having a totally different culture from a person who is from the Western Maharashtra. But he will be more close to Telangana person. A person who is from Telangana will feel more connected with a person from Deccan, whether it is from Maharashtra or Karnataka, rather than from Andhra Pradesh. Language is different culture concept. Culture is always by the climate of an area, and climate तीनों का same है, hot and dry climate. तेलंगाना हो, मराठवाड़ा हो, or any of this region. So we have here one, I told you there is a mentor, Reddy. You can go and meet him anytime for GS. 131 rank. He is from Telangana, Warangal. He feels more connected even today to his friends who are from Maharashtra rather than his friends who are from Andhra. क्यों? दोनों का खाना सेम है, दोनों का तरीका सेम है, दोनों का सब्जियां सेम है, सिर्फ नाम अलग है. If we go to Andhra, totally अलग हो जाता है, rice dominated. Therefore, a person from coastal Andhra Pradesh will be more connected to Tamil Nadu ka person rather than from, you are from which part? Vidar, no, she. Andhra. Are you emotionally attached to Telangana? See. Right? Telangana, hate. There is a cross between Telangana and Andhra Pradesh. You got an answer here. उसका reaction ऐसा था, why should I be? So, this is what is the, all is the part of a Deccan traps. Fine? So, step faults. The step faults, originate when the faulting occurs, in series, full stop, in series. So faulting has occurred in series. In such faults, the slope is in the same direction. The slope is in the same direction because the downward displacement of the rocks, occurs in same direction. The step faults give rise to landing stair aspect. मतलब स्टेयर केस, कुछ नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, लैंडिंग स्टेयर एस्पेक्ट. And hence
and hence are known as traps, and hence are known as traps. Example, Deccan traps. Example, Deccan traps. You can draw the diagram. सिर्फ ये वाला बनाओ, 3 dimension नहीं, this diagram, nothing else. I'm just showing you. So this is what you should achieve for. But ये कब? अगले जून के बाद, वैल्यू एडिशन, प्रीलिम्स के बाद वैल्यू एडिशन के डायग्राम्स विल बिकम मोर 3 dimensional, एग्जाम्पल्स विल इंक्रीज. पहले सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज, नो वैल्यू एडिशन. अभी नो नीड ऑफ ड्राइंग द अदर पार्ट. एंड वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा? फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. कैसे? डायग्राम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, नॉट फ्रॉम anything else. That is why you should have a textbook. I'm quickly revising. Faults are due to, are nothing but fracture. कोई भी चीज जब फ्रैक्चर हो जाती है, एंड उसके बाद डिस्प्लेसमेंट. हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स? 2. कौन से? नॉर्मल एंड रिवर्स. बाकी का आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. दिस इज ड्यू टू टेंशन, एंड तुम्हें डायग्राम पता है कौन सा? Fine, that is crystal lengthening. This is due to compression. Direction of the arrows will matter, nothing else. And तुम्हें डायग्राम पता है, crystal shortening. दोनों का आउटकम इज रिफ्ट वैली, and it is known as Graben or Block Mountain and Horst. And Horst. Getting it? This is what is the fault. उसके बाद बचता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. टाइम मिला तो लिखो एग्जाम में, मत लिखो स्टेप फॉल्ट. टाइम मिला तो लिखो, या टाइम भी कम होगा तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट along the plate margins, and step fault when there is a downward displacement in the same direction. Deccan lava plateau. Khatam. Fine. Take down the question now. Distinguish between the folding and faulting. Distinguish between folding and faulting. Full stop. What do you understand by Rift Valley? What do you understand by Rift Valley? Question mark. Explain the formation of rift valleys.
explain the formation of rift valleys with at least two suitable examples. Explain the formation of rift valleys with at least two suitable examples. 20 marks, 200 words. बताओ क्या करोगे? मतलब 20 marks, 200 words. So देखो, you already know what is folding and faulting. अब दो सुटेबल एग्जाम्पल पहले ढूंढो एग्जाम के लिए. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ योर अप्रोच शुड बी. ठीक है, मुझे पता है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग क्या है. आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ फोल्डिंग, वन डायग्राम ऑफ फोल्डिंग, compressional forces, anticline syncline. I will write a definition of faulting, one diagram, block mountain, rift valley. Second part of the question is what is rift valley. So you will tell what is a rift valley, but main part of the question is two suitable examples. So give me. नर्मदा एक हो गई, दूसरा तापी नहीं. नर्मदा तापी एक ही बात है. ऐसे नहीं लिखोगे कि विंध्यास एंड सतपुरास के बीच नर्मदा, उसके बीच तापी नहीं. अफ्रीकन रिफ्ट वैली. फाइन. यस, ब्लैक फॉरेस्ट रिफ्ट वैली. तीन मेजर रिफ्ट वैलीज इन द वर्ल्ड. वन इज द राइन रिफ्ट वैली जो यूरोप में है. सेकंड इज द ईस्ट अफ्रीकन एंड तीसरा इंडिया का. फाइन. एग्जाम्पल लिखोगे या थोड़े बाद बताओगे उसके बारे में? उसके बारे में बताओगे. यू आर नॉट राइटिंग जीएस, यू आर राइटिंग ऑप्शनल, मतलब रिसर्च पेपर टाइप होना चाहिए. सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली कैसे हुआ एंड so and the Indian Rift Valley kaise hua. So you already know how the Indian Rift Valley has been formed. We have not yet done the African Rift Valley, but before we go to the formation of the African Rift Valley, tell me how does the Rift Valley forms? How the Rift Valley forms? Tensional force. Due to tensional force what happens? There will be cracking. After cracking क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. सो हमें ब्लॉक माउंटेन एक्सप्लेन करना है या रिफ्ट वैली? हमें रिफ्ट वैली. सो आप क्या, कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. एंड दिस इज व्हाट इज अ होर्स्ट और अ ग्रेबन. फाइन. टेंशनल फोर्स. एग्जांपल, कैन आई से टेंशनल फोर्स विल अप्लाई एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. फाइन. एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. एंड इसमें एग्जांपल आएगा ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली. यूपीएससी ने क्यों पूछा है टू सुटेबल एग्जांपल्स? क्योंकि एक आपको देना है डाइवर्जेंट का, नॉर्मल फॉल्ट का, और एक आपको देना है कंप्रेशन का, दैट इज द कन्वर्जेंट फॉल्ट का. दूसरा पॉइंट आएगा, रिफ्ट वैली आल्सो कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस. कंप्रेसिव फोर्सेस में मोस्टली देयर इज फोल्डिंग, बट समटाइम्स देयर इज फॉल्टिंग. ड्यू टू कंप्रेशन some part of, generally the central part of a block, प्लेट लिखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा नहीं होता, of a region is thrown upwards. The upthrown region becomes a block mountain while the remaining two regions become a rift valley. पहले केस में क्या होता है? इंटेंशन रिफ्ट वैली बनती है, बाकी के बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स. व्हाट हैपेंस इन दिस केस? ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्स एंड द रेस्ट ऑफ द टू बिकम्स अ रिफ्ट वैली. फॉलोइंग? अंडरस्टैंडिंग? So this is how the rift valley has been formed. Example, Narmada and Tapi. In the case of India, Vindhyas and Satpuras were formed, not Narmada and Tapi valley. In the case of tension, center part नीचे चला जाएगा, वो बन गया rift valley, Great East African rift valley. In the case of compression, center part ऊपर चला जाएगा, so बचा हुआ part when you look from the mountains is a rift valley. So this is what you will have to write along with the diagrams. So we'll take just the structure of this question. You go home and write it properly. Right? I have just given this question कि ऐसा question आ सकता है. Understood? So definition of a, we have not done the definition of a rift valley or a block mountain. So rift valleys. क्या लिखोगे एग्जाम में? रिफ्ट वैली क्या है? What is Rift Valley?
It is nothing but a depression that lies between the, that is caused due to faulting. That is a rift valley. Depression को दूसरा नाम ऐसे नहीं लिख सकते. Rift valley is a rift. It will not, it is also not wrong, but it is not a good English. Fine. So rift valley is a depression or a trough that occurs between the two land masses due to the tensional forces. Sometimes they are also caused due to the compressional forces. Fine. So rift valley. Rift valley is a major relief feature. Rift valley is a major relief feature that is caused due to faulting activities. That is caused due to faulting activity. Full stop. It is actually a depression or a basin, or a trough, depression or a basin or a trough between two crustal parts, depression or a basin or a trough between two crustal parts. Full stop. Also, it is also known as graben. Characteristics. Subheading characteristics. First characteristics. Rift valley is generally long, narrow, but very deep. Rift valley is generally long, narrow, but very deep. Second characteristics. Generally the sides of the rift valley are surrounded by flat topped mountains known as horst or block mountains. Horst, H-O-R-S-T, horst or block mountains. Third, a region groundwater present in the region, and due to some force, forget kaun-sa, it can be tensional, it can be compressional, due to some force, ye crack hai, fine, and due to this part has got elongated, maybe tensional force, there is a displacement of this block downwards, ye part elongate hua, and ye ban gaya rift valley and the block mountain. That is the second characteristic. Generally are surrounded by block mountains, flat top mountains. यहाँ पे था groundwater. What will happen to this water? Will it come up now? Will it remain any longer as a groundwater? No. You will call this as now lakes. If the groundwater is present, कोई block has gone below, पानी ऊपर आएगा, that water will be exposed, and this will result into the formation of lakes, and they are known as rift valley lakes.
So Rift Valley का third characteristics, generally there are lakes. India exception है, India में rivers है. Generally there should be lakes. Example, open the east of page of Africa. Page of Africa. What is the page number of Africa? What is the page number? 92. 92. Fine. Look in the Africa. This is what is. So, ये Mediterranean Sea etc. Rift Valley, I'll show you the Rift Valley how it is. ऊपर Dead Sea है, नहीं दिखेगा. Then Red Sea. देखो shape कैसा है. Is it long and narrow? Is the Red Sea long and narrow? Yes. मतलब sea के हिसाब से is it narrow or not? Sea, is it any sea, is it such narrow? No. Generally the seas are very wide, but here Red Sea ही क्यों ऐसा है shape में? Long and narrow as compared to the sea. देखो जब भी हम long and narrow बात करेंगे, you have to be relative. किसकी बात हो रही है? Sea की बात हो रही है? Yes, this is long and narrow. River long and narrow, river की बात हो रही है. You should not compare now that with sea. You should compare it with another river. So Red Sea, is it long, straight and narrow? Yes. Rift Valley है. This is a Rift Valley. उसके बाद you will find numerous lakes here. देखो shape of the lakes will be somewhat like this. उसमें से you can find the famous lake, Lake Tanganyika. उसके बाद टांग्यानिका के नीचे लेक न्यासा और लेक मालावी. उसके ऊपर लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड. एंड इफ इट इज ऑक्सफोर्ड प्रॉपरली दिया है रेड कलर में. आई गेस इवन ओरिएंट लॉन्गमैन हैज गिवन इट. ओरिएंट लॉन्गमैन ने छोटे ब्रैकेट में दिया है. शो मी द ओरिएंट लॉन्गमैन. दोज हु आर हैविंग ओरिएंट लॉन्गमैन, इट इज शोन हियर. ऑक्सफोर्ड में इट इज प्रॉपरली शोन हियर. सो यू कैन सी द लेक्स. रेड कलर के डॉट दिए है. दिस इज व्हाट इज द ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली इन द वर्ल्ड. मिला? कैन यू सी द लेक्स? नाउ कंपेयर द लेक टांग्यानिका एंड लेक विक्टोरिया. व्हाट इज द डिफरेंस यू सी? Which is long and narrow? Tanganyika. How is the shape of Lake Victoria? Round. Right? क्योंकि Lake Victoria normal lake है. Lake Tanganyika is a Rift Valley lake. That is why it is long and narrow. This is what is the characteristics of a Rift Valley. अब depend करेगा climate. If the climate is such, ये Rift Valley इतनी हो गई कि Arabian Sea का पानी चला गया अंदर, making this region salty. So जहाँ salty पानी है वो Red Sea. यहाँ पे अरेबियन सी का पानी गया नहीं. दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका रिसीव्स गुड रेनफॉल, सो यहाँ पे द वाटर इज फ्रेश. एंड यहाँ पे दिस इज अ डेजर्ट रीजन. बिकॉज इट इज अ डेजर्ट रीजन, इट डज नॉट रिसीव एनी गुड रेनफॉल, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज इवेपोरेशन, एंड ड्यू टू इवेपोरेशन दिस वाटर इज एक्सट्रीमली सॉल्टी, जो एशिया में है. एंड यू कॉल दिस एज अ डेड सी. एक्चुअली इट इज अ लेक, इट इज नॉट अ सी. Why Dead Sea? It is so saline, the water is so saline कि nothing can survive in this lake, and इसलिए it is a Dead Sea. Have you seen the movie Exodus of Gods and Heavens? क्या है उसमें? Abraham या Moses, I guess. Moses asked the sea to open, taking the name of God. Sea opens, he passes through that, and then the पानी आता है and it wipes away the enemies. It is also given in Bible. ये है वो रेड सी जहाँ समंदर खुला. as per mythology, geography कहता है it is nothing but divergent plate boundary of the Indian plate and the African plate. And that is why future में क्या है? Africa is breaking like this. So this entire part will be a separate island, same like
Madagascar has broken. Europe, same process. Rift Valley. Black Forest is a host, Rhine is a Rift Valley. Before we go to the Black Forest, come to the map of Asia. एशिया का मैप स्टार्टिंग में होगा. Which one? कौन से माउंटेन्स के नाम? नो नो, दे आर वॉल्केनिक माउंटेन्स. उनकी हाइट देखो कितना हाइट है, 5000 समथिंग. सो रिफ्ट वैली के माउंटेन्स कभी इतने लंबे ऊंचे नहीं हो सकते. वो विंध्याचल सतपुरा जैसे होंगे 1200 मीटर, क्योंकि धरती इतनी ऊपर नीचे नहीं जा सकती 5000 मीटर्स के. दे आर वॉल्केनिक माउंटेन्स. इन द मैप ऑफ एशिया, लुक इन रशिया. पॉलिटिकल में देख सकते हो भी या फिजिकल में भी देख सकते हो. इट इज बेटर इन पॉलिटिकल. इन दिस पॉलिटिकल मैप of Russia, you find the deepest lake in the world, Lake Baikal, Rift Valley, but no block mountains. Fine. कैसा है शेप लेक बाइकाल का? पेज नंबर, इंडिया के बाद you will find a map of Asia. 66-67 को. यस यस, इससे एक पेज पहले, इससे एक पेज पहले. योर्स इज वेरी ओल्ड एडिशन, -4 कर दो. जो भी मैं पेज नंबर बोलूंगा न्यू एडिशन का -4. यस, लुक इन द पॉलिटिकल मैप. जहां रशिया का आई है, आई गेस ए के नीचे यू विल फाइंड अ रशिया का, जहां ए लिखा है पॉलिटिकल मैप नीचे वाला, जहां ए लिखा है, दैट इज द लेक बाइकाल, रिफ्ट वैली लेक, द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. फाइन. सेम विथ कजाकिस्तान में बलकाश मिला. दिस ऑल आर रिफ्ट वैलीज. बाइकाल, बलकाश एक्सेट्रा, all rift valleys. Why rift valley? जैसे इंडिया भी टूटा ड्यू टू collision, there was some crustal fracturing even in Asia, and जो part weak था वो टूट के नीचे चला गया, and they became the lakes, but there is no obviously block mountain surrounding this. Fine. But obviously Lake Baikal कभी नहीं पूछेंगे, बलकाश कभी नहीं पूछेंगे. You should know something about the African Rift Valley and Narmada and Tapi Rift Valley, but that is Indian geography. Fine. Narmada and Tapi Rift Valley won't be asked. What they will ask is formation of Vindhyas and Satpuras. Can I continue? Then third characteristics of Rift Valley. When the, what did I didn't dictate anything, right? A region where the Rift Valley is formed, a region where the Rift Valley is formed may have lakes, because the groundwater is exposed, when there is a displacement of the plate, when there is a displacement of the crust, not the plate. Groundwater is exposed when there is a displacement of the crust. Fourth characteristics and the last characteristics, some rift valleys are even found on the oceanic crust. मतलब याद रखना है कि rift valley सिर्फ continental crust में नहीं, some rift valleys are also found in the oceanic crust. Also found on the oceanic crust. Next, formation of rift valley.
जावा ट्रेंच रिफ्ट भी है और ट्रेंच भी है। ऑस्ट्रेलिया के मैप के आसपास वो सब इतना डिटेल आजकल जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मैप के पास देयर इज स्पेंसर गल्फ ऊपर, दैट इज अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बिलो द ओशनिक क्रस्ट, रेड सी। थर्ड एग्जांपल, ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? टेंशनल फोर्स एंड कंप्रेशनल फोर्स। फाइन। प्रॉब्लम मैं इसलिए लिखा रहा हूं ये क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, एक थियरीज है, टेंशनल हाइपोथेसिस एंड कंप्रेशनल हाइपोथेसिस। सो ओरिजिन, द फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैलीज, the formation of the rift valleys are grouped in, are explained by two hypotheses. Two hypotheses. One tensional hypothesis, or keystone hypothesis. Keystone hypothesis. Keystone species पता है? What are the keystone species? Lion for example. जो मेन स्पीसीज होते हैं जिसके ऊपर पूरा जंगल डिपेंड होता है, पूरा एनवायरनमेंट डिपेंड होता है। सो व्हाट इज द कीस्टोन? ये मीनिंग, व्हाट इज द वर्ड ऑफ मीनिंग कीस्टोन? आर्क में जो स्टोन होता है जिसको निकालने से पूरा आर्क कोलैप्स हो जाएगा, दैट इज अ कीस्टोन। सो कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन हाइपोथेसिस, द मेन पार्ट ऑफ द क्रस्ट हैज गॉन बिलो, दैट इज व्हाई कीस्टोन हाइपोथेसिस। और क्यों गॉन बिलो? टेंशन, जो देयरफॉर जो सेंट्रल पार्ट है वो नीचे चला गया एंड इट हैज बिकम अ रिफ्ट वैली। यू ऑलरेडी नो नाउ व्हाट टू राइट। सो ड्यू टू द टेंशनल फोर्स, due to the tensional force, a hollow space is created, a hollow space is created because of the cracks developed in, because of the cracks developed in crustal rocks, because of the cracks developed in the crustal rocks and their displacement and their downward displacement. And their downward displacement. Sometimes through these cracks, volcanic eruptions occur. Through these cracks, volcanic eruptions occur. Next, compressional hypothesis. कुछ नहीं, वही है, सिर्फ हाइपोथेसिस हो गया, आंसर वही है, compressional hypothesis. When the compressional force is applied, the sides of the crust are thrown upwards, forming horst or block mountains. Forming horst, H-O-R-S-T, horst or block mountains. While the central part slips down or slides down, forming the central part slips or slides down, forming rift valleys. Forming rift valleys.
एग्जाम्पल, फर्स्ट, दोनों का एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल मत लिखो। द ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, द ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। The Great East African Rift Valley, the Great East African Rift Valley is the longest rift valley in the world, is the longest rift valley in the world, which runs for 6,000 kilometers, which runs from 6,000 kilometers, which runs for 6,000 kilometers from Syria, Syria through Dead Sea, through Dead Sea, comma Red Sea, Red Sea, and through the lakes of, and through the lakes of ईस्ट अफ्रीका सच एज लेक, दो तीन लेक का ही नाम रखना याद, लेक तांग्यानिका, लेक तांग्यानिका, न्यासा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। ड्रॉ द डायग्राम, अफ्रीका का डायग्राम द इजीएस्ट। सी, थोड़ा अंदर, स्ट्रेट, कम टू दैट सी का एंड, मेक द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देन यहां पे ऐसे वी, रेड सी, डेड सी, and then you can show the lakes. Start making sea, then Africa will look like Africa. Can I continue? It is an example of divergent plate boundary, not transform. It is an example of divergent plate boundary by which the east, the African plates, by which the African plate is being split into two smaller plates, into two smaller plates.
such as that is Nubian plate and Somali plate. ये 25 million years ago it started forming, and future में this will be the two plates. There will be no African plate, Nubian plate and the Somali plate. Yeah, Somalia plate. Nubian plate. Somali या Somalia कुछ भी लिखो. Somali plate and the Nubian plate. This process started around 25 million years ago. This process started around 25 million years ago. This process started around 25 million years ago because the crust is thin. Because the crust is thin, and once fully developed, the area will look like two different plates separated by water body. The area will look like two different plates separated by water body. Example, the Red Sea region. Example, the Red Sea region. Red Sea region. देखो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया इन द रेड सी रीजन. सो दिस इज हाउ द रेड सी हैज बीन सेपरेटेड. आगे जाके ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका सेपरेट हो जाएगा और बीच में एक समंदर होगा. अब जियोग्राफर्स आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जियोसिंक्लाइन है जो बंद होने वाला है या ओशंस है जो बढ़ने वाला है. फाइन, बट कैसे पता लगेगा कि ये जियोसिंक्लाइन नहीं है, ओशन है? क्योंकि आगे जाके जैसे समंदर बनेगा बीच में देयर विल बी मिड ओशनिक रिज एंड द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका जस्ट लाइक ओल्डर डेज, ईस्टर्न अफ्रीका जस्ट लाइक ओल्डर डेज थोड़ा मूव करेगा एंड इट विल टच नॉर्थ अमेरिका, एप्लेशियन माउंटेन्स की जगह. सो इसलिए अटलांटिक ओशन इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. इंडियन ओशन का पानी बीच में चला जाएगा एंड दिस एंटायर रीजन विल बी अनदर सी. एंड मे बी जैसे टुडे ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, आफ्टर सम 40-45 million years later on this will be the largest island in the world. We do not know the speed because 2019 में the speed has suddenly increased and maybe people say कि 25 million year नहीं. It was started in 25 million years ago. People thought it will be completed in 50. People say now in next 1000 years it will be complete. There will be two different continents of Africa because volcanic activity बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है and it is breaking at a very high speed. 25 meters के आसपास per year it is breaking. So that is the Great East African Rift Valley. एक बहुत good documentary is there जहाँ पे a person is having his farm, third generation. First generation में the farm was totally his. Second generation में farm में थोड़ा crack आया, उसके lifetime में one farm is on one side of the Rift Valley, the other farm is on other side of the Rift Valley. खेत एक ही था, अब वो अलग अलग countries में है. Fine, क्योंकि एक country is on this side of Rift Valley, the other country is on the other side of the Rift Valley. Fine, ये होता है in this. क्यों? Convectional currents may have changed the direction. Why they changed the direction? We don't know. Fine. हम सिर्फ ये कह सकते हैं हाँ maybe because the Earth's crust is very thin over there. Second example.
Rhine Rift Valley, Rhine Rift Valley is also well developed Rift Valley, is also a well developed Rift Valley. RHINE, Rhine Rift Valley is also a well developed Rift Valley in which the upper part of the Rhine region, upper part of the Rhine region has experienced the rifting, has experienced the rifting due to isostatic adjustments, rifting due to isostatic adjustment. This rifting, this rifting has given rise to, this rifting has given rise to, this rifting has given rise to a rift valley through which river, rift valley through which river Rhine flows, through which river Rhine flows, and it is surrounded by, it is surrounded by the block mountains of डायग्राम की जरूरत नहीं यहाँ पे. इफ यू वांट कैन समवन टेल मी क्यों आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट हुआ? थोड़ा एरिया को देखो, नीचे कौन से माउंटेन्स है? एल्प्स. बिकॉज ऑफ द एल्प्स, जैसे नर्मदा एंड तापी बना वैसे ये रिफ्ट वैली बना. This is the Rhine. First time it was studied in this region. So इसलिए the German words Horst and Graben. First time the concept of Rift Valley was studied in Rhine. Black Forest is an example of a Graben, and Rhine is an example of, Rhine is an example of a Graben, and Black Forest is an example of Horst or Block Mount. This is very developed region. See, very interesting. This is a very developed region. British type of climate. बारिश बहुत होती है, घास भी है आसपास, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
So people here will have dairy farming, not cattle rearing for meat like US, but cattle rearing like India for dairy, milk के लिए. But as the region became developed and developed, instead of selling milk, they thought, why not convert the milk into something which is more and more beneficial. So they started converting milk into first powdered milk, फिर cheese, फिर chocolates, फिर cakes. So एक केक यहाँ से ओरिजिनेट हुआ जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट. So that is why the name is Black Forest. Fine. So इसलिए ब्लैक फॉरेस्ट के नीचे हमेशा नीचे का पार्ट हमेशा ब्राउन होगा. ब्लैक फॉरेस्ट केक देखा है, नीचे का पार्ट हमेशा ब्राउन होगा बिकॉज ऑल दिस रॉक्स आर बसाल्टिक. ऊपर तो ऊपर तो क्रीम होना ही चाहिए बिकॉज देन ओनली इट विल बिकम केक. फाइन. सो दिस इज हाउ ब्लैक फॉरेस्ट. इसलिए केक का नाम. सो दिस इज फेमस फॉर पेस्ट्रीज एंड केक्स. स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर चॉकलेट्स. डेनमार्क इज फेमस फॉर चीज. Dairy industry, food processing industry will dominate here. रूर, ये नहीं, ये वाला रीजन रूर विच इज अ ट्रिब्यूटरी, वो जर्मनी का पार्ट. इट इज फेमस फॉर कोल. क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज में कोल मिलता है, वैसे राइन के ट्रिब्यूटरीज में रूर में कोल मिलेगा. रूर रीजन इज फेमस फॉर कोल. फिर जीएस में मैंने बताया भी है, स्टटगार्ड, बॉन, एक्सेट्रा, ऑल द मेजर सिटीज, industrial cities of Europe are located in this region. That is the Rhine Rift Valley. No need of doing Narmada and Valley Rift, Tapi Rift Valley. वो हम Indian geography में करेंगे. So getting the two examples. Continental ड्रिफ्ट का भी एग्जाम्पल है. हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ से पहले इक्वेटर जा रहा था. कोल क्यों पाया जाएगा? नॉट बिकॉज ऑफ रिफ्ट वैली, बिकॉज व्हेन द ट्रॉपिकल वेजिटेशन गोज बिलो द वाटर. सो यहाँ से इक्वेटर था. पैलियोमैग्नेटिज्म का भी एग्जाम्पल है, शिफ्टिंग ऑफ इक्वेटर का भी एग्जाम्पल है. अब सी, यू शुड नो हाउ टू राइट. मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, पूछने के चांसेस भी कम है, बट यू शुड नो अगर आता है हाउ टू राइट ब्लॉक माउंटेन. कुछ नहीं, सिर्फ जहां जहां रिफ्ट वैली आंसर में वहां पे ब्लॉक माउंटेन होगा. आंसर का स्ट्रक्चर यही होगा, कंप्रेशनल हाइपोथेसिस, टेंशनल हाइपोथेसिस. फाइन. But the only thing you should be writing, instead of the part which goes down, the part which has gone up is Black Mountain. You know the examples. Vosges, Black Forest, Vindhyas, Satpuras. Fine with this? Clear? Have you gone through the textbook chapter? Very easy chapter. So what is the difference between volcano and volcanism? अगर पढ़ा है फर्स्ट पेज पे ही है. What is the difference? हाँ, so volcano मतलब क्या? एक्सप्लोजन. दैट इज ज्वालामुखी. वो ज्वालामुखी कैसे बनता है, उसके लिए देयर इज सम प्रोसेस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसेस. तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, द मैग्मा शुड राइज अप, or the convergent plate boundary, the plate should go melt, subduct, then that magma should be rising up. So entire process, फिर the magma will rise up,
After rising up, the magma will cool depending upon which type of magma or lava it is. Silica based है या iron based है, मतलब granitic है या basaltic है, it will cool, and after cooling it will give rise to the landforms, maybe plateaus or mountains. ये जो जितना भी process जो है, that is what is known as volcanism. Volcano is just a vent or an opening on the surface of the earth. So obviously हम ये chapter सिर्फ ऊपर से करेंगे because we are going to, you should prepare yourself for two things. One, volcanism versus volcanoes. I'll give you sub points of this topic. Composition of an volcano, मतलब क्या क्या आता है through volcano. So क्या क्या आता है through volcano is gases, उसके बाद लावा और मैग्मा, gases and water vapor, and last ऐसे ही पढ़ा है, और broken rocks. So those who have read, बहुत आसान है ये चैप्टर. After that, magma or lava is of two types, basic and acidic. Then after that, the next topic is landforms formed due to volcano. अब landforms of volcanic eruption are of two types. Sometimes when the volcanic eruption occurs, magma is coming up and it solidifies to form some kind of the features below the earth's surface. Then the magma comes up and solidifies to form the features above the surface of the earth. So landforms जो below the surface of the earth है वो intrusive, जो above the surface है वो है extrusive. So we have intrusive and extrusive landforms. Then the next part of this topic is इसका एक सब टॉपिक इज and the last part is, which is not given in your textbook, is your chapter like this? This is what is the chapter, obviously with lot of examples, etc. Fine. Now no, yes, you should know this. बिल्कुल भी नहीं. It should be done only for GS. Landforms. Very less chance, but you should know this for the further classes. Indian geography में batholith क्या है, laccolith क्या है, etc. That means I will say this should be done also for GS. Volcanics and plate tectonics, ये obviously optional का topic है. You should, but this can also be asked in the GS. Pseudo volcanic features, obviously only optional. I will not be dictating anything out of this.
You just understand what we are going to do for next 20-25 minutes ताकि आपको ये आंसर करना आ जाएगा. फाइन. ये नहीं है important बाकी का parts because our guide always are past year questions and if you look at the past year questions एक ही question आया है regarding the pseudo volcanic features. बाकी ये है plate tectonics, volcanics, volcanicity and plate tectonics. Only in the recent times there has been one question on the pseudo volcanic features. Question number 61 or 2017, question number 1A, the first question 10 marks के लिए. Write a note on the pseudo volcanic features 2017 में. कितने marks के लिए? 10 marks. You will see कि आपके पास इसमें 60-70 words से ज़्यादा नहीं है words लिखने के लिए. Then I'll tell you how to write such questions. Means you have to explain some volcanic features. Introduction में around some 50-60 words and then give the remaining 50-60 words to pseudo volcanic features. It's just like batholith, we have certain rocks. Just like crater lakes, we have certain crater lakes not formed due to volcanoes. Just like sill and dike, you have salt crystals like volcanoes. Just like the mountains which are known as cones. कितने टाइप के कोन है कल के चैप्टर में if you have studied there are 3 types of cone. One is the composite cone, दूसरा is cinder and ash cone and तीसरा is the parasitic cone. Composite cinder and ash cone मतलब क्या, मिट्टी से बना हुआ. That cinder and ash cone जैसा there are ant hills. This is a 3 pseudo volcanic features. So हमारा focus obviously will be on the pseudo volcanic features. Now those who have not read, you can go home and read it. मैंने कहा read करो, पढ़ो नहीं कहा. So at least read it once, you get an idea of what we are doing in the class because इसमें will go very fast. Fine. So what is the difference? I'll give you a definition of this. First try to understand. When the volcanic eruption occurs, we call it as a volcano. But इस volcanic eruption के लिए certain things have to be there. What the things have to be there? There has to be enough heat inside so that there will be formation of magma. After that, once this magma has been formed, there has to be isostatic adjustment. कि maybe the pressure यहाँ से बढ़ना चाहिए or from here the pressure should be there so that the magma will rise upwards. And then this magma should reach, there should be enough heat so that the magma is in the molten state and it rises upwards. If the heat is not there, there should be enough pressure for the magma so that it can erupt the landform and it rises upwards. Then when it rises upwards, it should obviously solidify. If it is silica, granitic magma or lava, it should solidify in the form of mountains, or if it is basaltic, it will flow for a certain greater distance and it will solidify in the form of plateaus. So this entire process which is there is what is known as volcanism or volcanism. Getting it? Pura process. So can I say the term volcano is opening while volcanism is both endogenetic and some extrusive features which occur on the land? Something which is both inside and both outside. Inside क्या हो रहा है? Melting etc. process of rising up. Outside क्या हो रहा है? Solidification etc. अब दूसरी चीज याद रखो. When anything cools and solidifies, there will be development of crystals.
So volcanic rocks or igneous rocks are always crystalline in nature. हमेशा उनके ऊपर कुछ ना कुछ crystals होंगे. डिपेंड करता है कहाँ पे वो कूल एंड सॉलिडिफाई हुआ. इफ द कूलिंग ऑकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स inside the earth, cooling will occur at a very very slow pace, and therefore there will be enough time for the development of the crystals, and therefore the size of the grains or the crystals will be bigger. If the cooling occurs outside the surface of the earth, the size of the grains, the cooling will be so fast that there will be not enough time for the crystals to develop, and therefore size of the grains or the crystals will be smaller. So the rock which cannot flow for a greater distance, granite, will be generally formed below the surface of the earth, and it will be having bigger crystals. The rock which can easily pass through the cracks, divergent plate boundary, जो fluidic है, जो पतला है, जो बाहर आके melt होता है, that will have lesser crystals. Example, basalt. Fine. So there will be some kind of a difference in the rocks. Again, not required for your optional answer writing, but ये सब चीजें GS के लिए भी पता होनी चाहिए और अच्छे answers लिखने के लिए पता होनी चाहिए. अब when the rock cools and solidifies below the surface of the earth, so this is asthenosphere magma, उसके ऊपर there is a crust, and the crust is dominated by the sedimentary rocks. कि बहुत पुराना है earth, 4.2 billion years old. So कुछ rocks must have broken around 4 billion years old. Fine, उन्होंने एक layer बना ली. Some rocks broken afterwards, they formed a different layer. Some rocks broken recently, they form a different layer. Based on this, so this will be the layers of the sedimentary rock. Based on this, this magma which is rising will cool and solidify inside the layers, inside the sedimentary rock, and इसलिए there will be of different shapes and sizes. So they are known by different names such as etc. Ask yourself, कोई क्वेश्चन आएगा इसमें से? नहीं आएगा. फाइन. ये सिर्फ जीएस के भी, वो भी प्रीलिम्स के टॉपिक है. बैथोलिथ मतलब क्या, लैपोलिथ मतलब क्या, लोकोलिथ मतलब क्या. फाइन. Question will directly come from this part. So can I continue? Fine. You take down the definition of volcanism, not Savindra Singh ka definition, thoda slight change in the definition. As the earth is constantly in motion, as the earth's surface is constantly in motion due to various convectional currents, there are numerous catastrophic or sudden forces. Such as volcanoes. Volcanism is topographically significant activity. Volcanism is topographically मतलब topography बनाएगी, mountains, plateaus, etc. बनाएगी. See, imagine had there been no volcanism, पूरा Deccan plateau नहीं होता, कुछ नहीं होता उधर. इसलिए topographically a significant activity which is endogenetic in nature, and is produced due to physical and chemical changes taking place in the earth's interior. And is produced due to physical and chemical changes that is taking place in the earth's interior. And chemical changes that is taking place in the earth's interiors.
due to volcanism, due to volcanism, magma rises, erupts in the form of volcano. Magma rises, erupts in the form of volcano, cools and solidifies to give rise to different endogenetic, different, not endo, sorry, intrusive and extrusive, intrusive and extrusive features, intrusive and extrusive features features. The entire process that is associated with intrusive and extrusive environments, intrusive and extrusive environments is known as volcanism, is known as volcanism, is known as volcanism. Fine. I'll stop here today. So कल जिन्होंने आज पढ़ के नहीं आए हैं कल जरूर पढ़ के आना, because hardly I'm going to take this chapter for half an hour. You can read from G.C. Leong also if you want. Fine. You can read from G.C. Leong if you find Savindra Singh is, अगर आपके 2 classes हैं and if you are not getting enough time, read from G.C. Leong and come the chapter of volcanism. बाहर बच्चे लाइन लग गई है. कल क्लास उस रूम में करनी, टेस्ट इधर करती है ताकि मैं खींच पाऊँ ना, जल्दी छोड़. कल बता दूंगा. अब एक्चुअली मैं खींच नहीं सकता क्योंकि बाहर बहुत लंबी लाइन लग जाती. सो कल से तुम्हारा क्लास उस रूम में होगा. ले आओगे आप? अरे मैं ले आता हूँ. Yes, Sunday to Sunday. You may not come for the discussion.